Good morning, everyone. This is the last slide of chapter 3, Human Reproduction. Before this slide, we have studied fertilization and implantation. After fertilization and implantation of the embryo into the endometrium of the uterus, we will study pregnancy and embryonic development. In this slide, I will also discuss the parturition process, means delivery of the baby, and lactation. Now come to the point pregnancy. इसके पहले वाले स्लाइड में ही मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे एम्ब्रियो जो है वो इंडोमेट्रियम यूट्रस के इंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट हो जाता है, मीन्स कनेक्टिविटी हो जाती है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द endometrium of the uterus or uterine wall also. जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा, दिस विल लीड्स टू प्रेगनेंसी. इसको हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं. एंड नियर अबाउट 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होती है, जिसमें सेवरल, अब जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट फेज में है और सेवरल हार्मोनल चेंजेस होंगे उसके बॉडी में, जो कि इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे जिसके कारण प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है. फिर से मदर को रेडी भी किया जाता है ताकि वो बाद में पार्टूरिशन के बाद लैक्टेशन करवा पाए और अपने बेबी को नरिश कर पाए. ओके. और पार्टूरिशन के लिए भी, मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए भी पूरे ये जितने फेजेस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी ऑल्सो, दिस ऑल आर अंडर न्यूरो हार्मोन्स एंड हार्मोनल कंट्रोल. How the pregnancy or the implantation takes place. The chorionic villi are formed by the upper portion of the trophoblast, which interdigitalized with the uterine tissue and forms placenta. हमने पढ़ा है कि ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो में. वन इज ट्रोफोब्लास्ट एंड द सेकेंड इज the inner cell mass. Okay, this is the outer layer trophoblast and this is inner cell mass. This inner cell mass will form whole the embryo. Every part of the embryo will be formed by this inner cell mass cell of the cells. What does this trophoblast does? This trophoblast proliferates and forms villi like structure on its upper portion, on its upper layer. This villi like structure interdigitalized, means यूट्रस के इंडोमेट्रियम, ये अगर हमारा यूट्रस है तो इसका ये इनर लेयर इंडोमेट्रियम है, इसका भी प्रोलाइफ्रेशन होता है ऐसे, एंड बोथ विल इंटैंगल, दोनों जो है आपस में इंटैंगल हो जाएंगे ताकि एक फॉर्म स्टेबिलिटी इस यूट्रस और ये एम्ब्रियो में हो. तो ये जो इनर सेल मास है, ये राउंडेड कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस विल फॉर्म द एम्ब्रियो एंड दिस विल help in the implantation of the embryo into the uterus, and this leads to the pregnancy. Placenta is the structural and functional unit between the developing embryo and mother's body. Here again the placenta is very important question for class 12. In placenta various types of question arises. What does placenta do? How the placenta act as an endocrine gland? These are the questions we will study in this slide also.
Now this is the diagram of NCERT book, how a baby is getting embryo is being implanted into the uterus. See here, this outer layer, this white structure, placenta. Here placental villi, it is formed by the trophoblast. Cavity of the uterus, it is the space of the uterus, this. Now yolk sac. In mammals, yolk sac is very reduced because there is development of placenta and we get the nutrition from the mother's body. And yolk sac क्या करता है? फर्टिलाइज्ड एग को नरिश करता है. चूँकि we are placental and we got nourishment from the mother, so yolk sac is reduced. This is baby embryo, developing embryo, and placenta. This placental covering is joined with the baby by umbilical cord. Okay, and this layer is also known as this, where the baby is being placed. This is allantois, amnion. It is amnion fluid, AMNION, amnion fluid. It is this. In this, the baby is whole baby is surrounded by amniotic fluid that acts as shock absorber and also nourish and give a liquid environment to the growing embryo. This layer, this is the plug of mucus in cervix. This stops, and a plug is so that complete structure will be formed, and baby will be implanted in the uterus. This diagram is also important for your exam. Now come to functions of placenta. It facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo. It is the placenta that forms a connectivity between the embryo and the mother's body. ये प्लासेंटा ही है जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो और मदर बॉडी में कनेक्शन बना के रखता है. It removes excretory wastage materials and carbon dioxide produced by the embryo. Because embryo is growing structure, it has not developed his own organs, so waste materials and excretory products and also by carbon dioxide will be excreted out via placenta. Placenta also acts as endocrine tissue and produces several hormones. Here this is very important question, how the placenta acts as endocrine tissue, because it also secretes several hormones in the pregnant lady. Hormone is human chorionic gonadotropin, HCG, human placental lactogen, HPL. Estrogen and progesterones are also secreted by placenta. Remember, और कैसे कहाँ से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है? क्वेश्चन कभी कभी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन? प्लासेंटा, ओवरी, both of the above, none of the above. Answer will be both of the above, because we have already studied estrogen is also released by the growing follicles and also by the ovary. Progesterone is also released by the placenta and corpus luteum also. Progesterone is released by placenta and corpus luteum. Estrogen is released by growing follicles, ovary and placenta. This type of multiple choice question may come. Estrogen is released by which of the following organ? Ovary, corpus luteum, progesterone, ovary, corpus luteum, placenta, and fourth choice will be all of the above. Answer will be all of the above. पढ़ने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते जाइए.
Placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in transport of substance to form to and from the embryo. Placenta जो है वो embryo से connected है by umbilical cord. umbilical cord से, क्योंकि पीछे डायग्राम में देखिए दिस इज umbilical cord, ये umbilical cord है, यहाँ पे ये प्लासेंटा ग्रो कर रहा है and this placenta is connected by the embryo through this umbilical cord. This umbilical cord is not a gland. ये umbilical cord जो है वो gland नहीं है. It's a only connective tissue between the embryo, placenta and the embryo. In the later stages of pregnancy, hormone called relaxin is secreted by ovary. Pregnancy continues for 9 months in human. Then in the later stages of the ovary, relaxin secrete होता है. In the later stages of pregnancy, ovary के द्वारा जो है वो relaxin secrete होता है. It is also an pregnancy hormone. It is not secreted in normal lady. Several other hormones levels also increased like estrogen, progesterone, cholesterol, prolactin, thyroxine, etc. to maintain the pregnancy. And several other hormones also secreted, so that because there is vigorous change in the physiology and in the physiology of the mother, because she has to nourish the child, she has to carry the baby for whole 9 months. So various changes goes inside the body of the woman during pregnancy. Their mood also swings, their taste also changes, their choices also changes, choices of eating, behavior also changes. These changes are brought about the secretion or accumulation of these hormones in their body during the pregnancy. And these hormones also help them in the later stages of the pregnancy, in the delivery of the baby, and also formation of the milk in their mammary glands. This hormone helped in the formation of milk also. Always remember here that HCG, HPL and relaxin are produced in a pregnant female only. Again this forms an important question. ये जो आपका इसमें इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन है, ये देखिएगा नॉर्मल कंडीशन में भी रिलीज होता है. ये प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लुटियम रिलीज करता है. इस्ट्रोजन जो है वो ग्रोइंग फॉलिकल्स एंड ओवरी भी रिलीज करती है. थायरक्सिन भी रिलीज होता है. कॉर्टिसोल भी रिलीज होता रहता है. तो लेकिन एक लेडी जब प्रेग्नेंट होगी तभी ये तीनों हार्मोन जो है प्लासेंटा के द्वारा एंड ओवरी के द्वारा रिलीज होगा, क्योंकि प्लासेंटा तो तभी फॉर्म होगा जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा. सो दिस HCG, HPL and relaxin are produced in a pregnant female only. This point is also very important for exam. Now the gastrulation. Remember at the initial first slide I have told gestation period. Gestation period means the whole period when the baby is inside the womb of the mother. But this term is gastrulation. ये जो term है वो gastrulation है. Gastrulation जो है जब बेबी का ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इनर सेल मास है वो लेयर्स में बढ़ जाते हैं. हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़े भी हैं और एनिमल क्लासिफिकेशन में भी पढ़े हैं. देयर आर 3 जर्म्स लेयर. जब इनर सेल मास 3 जर्म्स लेयर में बढ़ जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन. क्योंकि यही पहला प्रोसेस है जब एम्ब्रियो का ऑर्गन डेवलपमेंट होगा. मीन्स ऑर्गन, टिश्यू, ये सब डेवलपमेंट से पहले, सबसे पहले तो क्या होगा, वो जो इनर सेल मास है वो 3 जर्म लेयर में डिवाइड होंगे, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. दिस डिवीजन इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन. The inner cell mass also contains stem cells which have potential to grow into all tissues and organ. It is important point.
that inner cell mass has stem cells also, and we know that stem cells are immortal cells. Immortal cells means they have capacity to develop into any organ or tissue um, if the favorable surrounding is, or if the favorable condition is provided to them, then these stem cells will grow into complete tissue or organ of that embryo in the later stages of its life also. So stem cells bank are also prepared nowadays, available stem cells bank. बिकॉज क्यों स्टेम सेल्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं? बिकॉज इट हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो इनटू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन. This phenomena or this activity of the growing embryo during the whole pregnancy period is very important. कब किस मंथ में क्या होता है, एम्ब्रियो का कौन सा ऑर्गन फॉर्म होता है, क्या उनमें डेवलपमेंट होता है, ये इस पॉइंट में, इस स्लाइड में है. फर्स्ट मंथ में हार्ट इज़ फॉर्म्ड. पहले मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है. जैसे आप पिछले स्लाइड में देखें कि तीसरे हफ्ते तक गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है. ड्यूरिंग द इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी. उसके बाद फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड. ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट मंथ के पहले वो जो एम्ब्रियो है वो डेड है. इट्स ग्रोइंग, बट द ऑर्गन हार्ट इज फॉर्म एंड इट्स ग्रोइंग एंड इट्स लिविंग ऑल्सो. ये लिविंग भी है और ग्रो कर रहा है. बट द हार्ट ऑर्गन इज फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मंथ. We can hear the sound of the heartbeat by the stethoscope. During second month, at the every month is being here taught by the end of that month. यहाँ पे जो भी month है वहाँ by the end of, not the initial of that month, उस month के end होते होते limbs and digits will be formed. limbs and digit बन जाएंगे, मतलब fingers जो है वो bifurcate हो जाएंगे. 12 weeks or third month or after first trimester. Whole pregnancy period is divided into 3 trimester. तीन महीने का 3 trimester है. फर्स्ट जो है 1 to 3rd month, first to 3rd month. Second is 4th, 5th and 6th, and the third is 7th, 8th and the last month, that is 9th. तो पूरे 9 मंथ को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं. और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ के ख़त्म होते होते हमारा एम्ब्रियो का लिम्स बनता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बन जाते हैं. मीन्स 3rd मंथ के बाद ही पता चलेगा एक्सटर्नली और वाया अल्ट्रासाउंड that it is male or female, because external genital organs are formed after 3rd month only. Now after the during the end of the 5th month, first movement of the baby is felt by the mother and appearance of hair on head. These all activities are important. Now important for exam. Now after second trimester, that is after the end of 24 week, you can calculate the pregnancy period by the weeks also. 1 month has 4 week. Second trimester means 6 month, 6 4 ja 24 weeks. Body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. ये आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स आंखें खुलती हैं और बॉडी जो है वो हेयर से कवर्ड हो जाता है. हमारे वर्टिब्रेट्स और मैमल्स की पहचान है फाइन हेयर ऑन द स्किन. एंड बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ और 3rd ट्राइमेस्टर द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी. अब देखो ये जो पार्टुरेशन है मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी है, इट इज़ totally under the control of hormones, and
uterus, the wall of the uterus or the muscles of the uterus play very important role in the normal delivery of the baby. Here we are talking about the normal delivery, when the baby will be delivered by the birth canal of the female, not by cesarean. जब फीटस 9 मंथ का हो जाएगा और फुली डेवलप हो जाएगा, देन वो एक खुद मतलब फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का के पास ये मैसेज सेंड होगा दैट द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड. आफ्टर दैट पार्टुरेशन प्रोसेस विल स्टार्ट. फिनिशिंग gestation period about 9th month, parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. 2-3 प्रीवियस ईयर के प्री बोर्ड्स में भी आया है ये क्वेश्चन कि हाउ द पार्टुरेशन प्रोसेस इज इंड्यूस्ड इन अ फीमेल आफ्टर द completion of 9 month. This is the answer of your question. After finishing gestation period about 9 months, parturition is induced by a complex endocrine mechanism. Neuroendocrine means neural hormones also and other endocrinal glands also are actively participate in the process of parturition. The signal for parturition originates from the fully developed fetus and the placenta by fetal ejection reflex. This term is very important. Fetal ejection reflex means एक रिफ्लेक्स रिएक्शन होगा जिसमें यूटेराइन मसल का अचानक कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स विल गिव symbol to the oxytocin to the pituitary gland to release oxytocin. This oxytocin is released by the maternal pituitary gland, which is first initiated by fetal ejection reflex. And what happens in fetal ejection reflex? The first time the uterine wall contract, and when it contracts, when the babies give the maturity symbol or the maturity sign to the mother's body or the mother's neuroendocrine glands. Here you have to note that a release of oxytocin from maternal pituitary causes uterine contraction, and uterine contractions again causes the release of oxytocin. मीन्स ये चेन रिएक्शन चलता है, ये रिलीज होगा तो यूटेराइन वॉल कंट्रैक्ट होंगे और यूटेराइन वॉल कंट्रैक्ट होंगे तो ये रिलीज होता रहेगा. और ये कब तक होगा? व्हेन द बेबी विल बी पुश्ड टू द बर्थ फ्रॉम द बर्थ कैनाल टू द आउटसाइड. यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस causes further more secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions. This leads to the expulsion of baby out of the birth canal called parturition. After that, placenta is also expelled out of the uterus. It is very important for the mother's health that after the delivery of the baby, whole placenta is also expelled out of the uterus, and it must be expelled out. Okay, then the baby is delivered, and after that lactation means nourishing of the baby by the mother. During the pregnancy period, the mother prepares herself by proliferation of the mammary glands and mammary cells also. Production of milk from the mother's mammary glands towards the end of the pregnancy is called lactation. Lactation helps in nourishing the newborn baby. Milk, अब जो शुरुआती दिनों में बेबी डिलीवरी के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं. ये कोलेस्ट्रम जो है
वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ एंड नेचुरल इम्यूनिटी, फॉर डेवलपिंग द नेचुरल इम्यूनिटी इन द न्यूबॉर्न बेबी, because it contains several antibodies that is absolutely essential to develop resistance for the newborn baby against many immunological diseases, okay, during its growing period and after, during the baby's life child also. So why colostrum is preferred by the doctors or preferred by the um, doctors to give to the newborn baby? The answer will be because it contains several antibodies that is absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. This question also comes, it is a general question, और ये हर नरिशिंग ह्यूमन बीइंग और नरिशिंग पेरेंट को जानना चाहिए. नाउ it is well known and means breastfeeding is always recommended during the initial periods of the infant growth by the doctors. It is general talk and every parent or every living being or homo sapiens will shall know that breastfeeding is always recommended during the initial periods of the infant. Whenever you will go through these processes in the initial days, doctors will always prescribe the mother's milk to the growing baby. बाहर का दूध हमेशा मना किया जाता है और एक स्मार्ट पेरेंट और एक लर्नेड पेरेंट की पहचान है. दे ट्राइड टू गिव द ब्रेस्ट फीडिंग टू हिज or her baby because initial periods of the infant growth by the doctor for healthy upbringing of a healthy baby. Okay, this topic leads to the completion of the chapter human reproduction, जिसमें हमने प्री fertilization events in human both in male and female, then fertilization, then post fertilization that is zygote implantation, then pregnancy, during pregnancy the embryo development, delivery of the baby and nourishing of the baby. इन सभी टॉपिक को हमने इसमें पढ़ा. ये चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसके साथ फिनिश होता है. बी इन टच ऑफ बुक, NCERT book I have followed and I have only systemized the topics of NCERT and completely I have taken the lines of NCERT in this slide. Okay, not more than NCERT and not a single point less than NCERT. Do the question answer I will give you in the further slides. Okay, thank you.